Hello everyone. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. How was your last session? We have some queries for that session, ma'am. Okay, so you have a group, right? So you can ping over there the question, or if you want to know. Uh, Ma'am, we all are wanted to reschedule sequel all classes, ma'am. Sorry, you all need another one SQL session, is it? Okay, whatever queries you have, you can raise that to your queries channel. And today we are going to learn about statistics. So before starting, you tell me what are the things you know about statistics? Just write down yes or no. If you know something, say yes. If you don't know anything about statistics, say मैम no. एक्चुअली जो वो एसक्यूएल का अपना लेक्चर था ना, वो Hmm. मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने हमें टीच नहीं किया। हम उनको बोल रहे थे कि प्रैक्टिकली टीच करो, बट पता नहीं उनका Hmm. लेक्चर खत्म भी हो गया और वो चले भी गए। अभी हमको ये इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, तो अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि एसक्यूएल का लेक्चर खत्म हो गया है। आई डोंट थिंक कि पूरा उन्होंने पूरा कंप्लीटली हमें टीच किया रहेगा। लाइक एंड मुझे ऐसा लगता है, बाकी और किसको क्या लगता है वो लाइक सबका डिफरेंट ओपिनियन है। मैम थोड़ा सा ना वो टेक्निकल इंग्लिश थी ना, तो वो क्वाइट ऑफ डिफरेंट हो रही थी और उसके चक्कर में काफी कुछ समझ में भी नहीं आ पाया ढंग से। सो व्हाट कैन वी डू, सम सजेशंस, मैम? Okay, so what I can do from my side, I can raise this topic to the team. ओके, They can help you with something. ओके देन मैम, इट्स गुड। Okay, just hold on. Okay, before that, tell me, is it same for everyone? Is it same for everyone? भाई प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Same for इफ everyone. एनीवन Yes, हैज ma'am. क्वेरीज प्लीज Ma'am, रिप्लाई। yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैम जैसे आप प्रैक्टिस के लिए टाइम देते थे ना कि आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करो, तो Hmm. वो भी सर वो भी ऑप्शन नहीं देते थे। डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर देते थे। मतलब कंटिन्यू रुकना नहीं है, मतलब फटाफट फटाफट क्लियर करो ऐसा। या इट्स टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी मैम, सो या वो लाइक और 4 लेक्चर में इन्होंने पूरा एसक्यूएल खत्म कर दिया। लाइक वी आर अमेज्ड। किसी ने तो इंस्टॉल ही नहीं किया था, उन्होंने इंस्टॉल करना बताया ही नहीं। कुछ नहीं बहुत बताया मैम, कुछ बहुत मतलब। लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, प्रैक्टिकली वो सॉल्व नहीं किया है जो भी उन्होंने दिया था। मैम मैं पूरा तो एसक्यूएल कल डाउनलोड किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं यूट्यूब पे देख के डाउनलोड किया। ठीक है। मैम आप ही ले लो ना एसक्यूएल का लेक्चर प्लीज मैम। उनका कुछ समझ नहीं आता मैम, कुछ एक वर्ड नहीं समझ आता है। Saurav, I don't take all the topics, no. So for different topics, there are different people. I take your algorithms. I take your Python. I take your statistics.
I don't cover all the topics. Ma'am, but So, can you please request for SQL access? So it will be good for us because we have learned Python from you. hmm. But SQL is not my topic, so And he taught बोलोगे only भी तो 4 मैं lectures to us, and like he's doing, he's not teaching us properly. He's not giving us time to practice those questions. He just taught us whatever the questions and like subjects are, and he went off at 9:30. So we don't know how to do it practically. okay. We know the theoretical part, but we don't Hello, know the hello practical guys. part. Hello. Yeah, hi Kiran. If you can help them with like what to Yes, do yes, yes. here. So you can, hello guys. If you have any queries, then you have to raise in the query forum. Okay, we will update over there. Don't worry about your lecture. We can do something. Okay, but we have to continue with the lecture with Suchismita. That is mandatory. Okay. If you have any concern, if you have any query, then please raise on the query forum. Our team will be respond there. And if is there necessary to schedule some sessions for you, our team will be schedule the sessions. Okay, don't worry about that. And Sujismita, you can continue please with your Mm-hmm. Okay. So, yeah, what are the things you know about statistics? If you know something, say yes. If you don't know, just say no. Over chat. Okay, I'm getting more no, but that's absolutely fine. Okay. So first, before starting this, let me give you an idea that why we are learning about statistics. So, let's imagine you are going to create a model. Okay. Now, model, I gave you one example that what is model, like why we are learning this coding thing, why we are learning Python, right? We learned about Python so that we can create codes, so that we can write our codes according to our needs, so that we can create or we can fulfill our client's requirement. तो मान लो कि मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला है कि मुझे एक मशीन बना के दो वेर मैं अगर एम्प्लॉइज का डिटेल्स डाल दूं तो ये मशीन मुझे बोल देगा कि इसका सैलरी कितना होना चाहिए. ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट. नाउ अभी इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे डेटा चाहिए जो मुझे मेरा मशीन को फीड करवाना है ताकि मेरा मशीन समझ जाए कि व्हाट टाइप ऑफ people are there and मेरा जो डेटा में फीड the data I will feed to my machine, the data should be according to the company, right? Because let's say you are running one digital marketing company, okay? So your salary scale will be very like it not be like a data scientist, right? It not be like a software engineer, right? So in that case, if I am running a digital marketing company, my salary scale will be less than a person or than a company who is running a software company or a data science company, right? So in that case, for me, my data will be according to my need. And your data, let's say you are running one data science company or you are running, sorry, data science company will be a wrong term. We are running a software company, okay? Where your salary skills are way higher than me. Okay. Now, so the client who is asking to create the machine, वो भी एक digital marketing का company चलाते हैं. Okay. So what I need for my machine, I need the data जहाँ पे let's say last 5 years data of that company so that my machine can understand okay अगर इसका experience इतना years है, अगर ये person को ये skills आता है तो I will decide or I will give 40,000. अगर उसके पास ये वाला स्किल नहीं है, ओके, और उसके एज अगर ये थोड़ा ज्यादा है तो उसको मैं
इतना सैलरी दूंगी, ठीक है। तो ये रेफरेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? डेटा से मिलेगा, वो ही कंपनी का डेटा मुझे चाहिए, राइट। अभी मान लो उसके पास डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सिमिलर कंपनी। लेट्स से सौरभ एंड सोहेल रन सेम टाइप ऑफ कंपनी। तो मेरे पास डेटा नहीं है बिकॉज आई एम अ न्यूबी, तो मुझे डेटा कलेक्ट करना है सौरभ एंड सोहेल से। Okay, now I have collected data. As a data scientist, I'm collecting data from Saurav and Sohil, and then I'm creating a machine. I'm feeding that data to my machine so that I can create uh, a model where the model will predict the salary of a new employee for that ABC digital marketing company who is my client. ठीक है? Now, like अगर कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो you can ask me at that time. Okay? तभी पूछ लो। इट शुड नॉट बी लाइक कि इतना लास्ट 10 मिनट से क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, तभी पूछ लो कि अभी बता दो ये क्या हुआ, ठीक है। So now let's say this is the scenario. So I'm creating one model for a client who's running a digital marketing company, and the requirement is I need to create a model so that ABC company can predict the salary of a new employee. Okay, now अभी ये जो मॉडल हम क्रिएट करेंगे इसके लिए मेरे पास दो चीज होना चाहिए। वन, प्रॉपर डेटा, टू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो अभी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का हेल्प चाहिए। ओके, आपके पास मान लो 25 कॉलम्स है एंड 25,000 रोज है, ये तुम्हारा डेटा सेट है, ठीक है। अभी ये डेटा को तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। हाउ यू विल अंडरस्टैंड? ये डेटा तुम विजुअलाइज कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज दिस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट। ये सारे नेम्स तो सुना हुआ है, राइट? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, वी हैव क्रिएटेड दिस विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। वो कोड हमने सीखे थे ना, तो विद द हेल्प ऑफ दोज कोड्स वी कैन विजुअलाइज आवर डेटा, ठीक है। अभी विजुअलाइज करने के टाइम we need to take help of statistics. Guys, please go on mute. अभी ये विजुअलाइज करने के लिए एंड समझने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स का हेल्प चाहिए। ये छोड़ के और एक चीज के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स का हेल्प चाहिए। मान लो तुम समझ गए क्या है डेटा, तुम्हारे पास सफिशिएंट डेटा है और तुम स्टैटिस्टिक्स के हेल्प लेके वो बार ग्राफ, ये वो ग्राफ लेके तुम समझ भी गए कि ये डेटा क्या बोलना चाहते हैं एंड हाउ द डेटा लुक्स लाइक, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज यू नीड टू राइट कोड्स, राइट। अभी कोड लिखने के टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एल्गोरिदम मैं यूज करूं ताकि ये मॉडल ठीक से मुझे प्रेडिक्शन दे, ठीक है। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम्स। अगर आप सारे एल्गोरिदम्स आपको पता होगा देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि इस सिनेरियो में कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, राइट। सो दैट यू विल लर्न लेटर ऑन। आप सारे एल्गोरिदम्स के बारे में समझोगे, वो एल्गोरिदम यूज करके कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं वो भी आप सीखोगे। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एल्गोरिदम सीखने के लिए देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो। आपको मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस पता होना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूलाज है वो थोड़ा जानना जरूरी है। I'm not asking you to remember all the formulas, but you need to know. When you are sitting for an interview, it is expected from your side कि आप मीन तो आपको पता ही होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता ही होगा। These are the basic requirements. Like if I am the interviewer, I expect you to know all these things. It should not be like कि okay, what is standard deviation? मुझे ये तो नहीं पता है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आप अगर बैठ रहे हो इंटरव्यू के लिए आपको ये सब तो पता होना चाहिए ही। ओके, सो फॉर दैट
For two reasons, we are learning statistics. One, to understand algorithms. Two, to understand data. ठीक है, अभी algorithm जब आप सीखोगे, that time we will be using these kind of like terms. These terms we will be using, जो आप अभी सीखोगे. ठीक है? Okay. Now, when talking about statistics, there are two important parts. One is descriptive, one is inferential. Now, what is the difference between these two? Descriptive matlab when we are learning about data. Okay, you are trying to understand कि जो data तुम्हारा हाथ में है, उसके अंदर क्या है? You are trying to describe your data to yourself and to other people. Okay? अभी descriptive statistics अगर आपको नहीं पता है, so you won't be able to describe your data. You will not know all the techniques कि how to describe this, how to understand the data. मेरे पास data तो है, बहुत ज़्यादा data है, but I don't know how to use it. I don't know how to understand this. I don't know how to describe this. तो that data is equal to 0. आपको नहीं पता है कि how to use it. तो आप क्या ही करोगे वो data लेके? राइट, तो उसके लिए यू नीड टू नो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी यूज टू इन्फर समथिंग कि सब कुछ हो गया एंड उसके बाद आई एम राइटिंग वन कंक्लूजन कि ये सब चीज करके मुझे पता चला ये. ठीक है, मान लो when you are starting your research, let's say you are doing PhD and आपको एक research paper लिखना है. ठीक है, and you have chosen a topic where it talks about के let's say a particular medicine, let's say medicine A is working fine or not. Okay, या medicine B ही अच्छा था, medicine A का कोई जरूरत नहीं है. कि आपको ये पता करना है कि आपने एक मेडिसिन ए क्रिएट की है एंड यू डोंट नो दैट वेदर इट्स यूजफुल और नॉट. ओके, सो यू नीड टू प्रूव दैट. ओके, नाउ इन दैट केस when you are starting your research paper, you need to write two hypothesis where we talks about two things, one positive, one negative. Okay, one say, okay, this hypothesis we'll discuss in detail, maybe tomorrow we'll discuss that, but today I'm just giving you a hint. In inferential statistics we talks about after doing all the tests and everything, what is the conclusion? Okay, what is the decision? Okay, now inferential पूरा भूल जाओ, अभी हमें descriptive में फोकस करना है. we'll learn about descriptive statistics. ठीक है, अभी descriptive statistics शुरू करने से पहले, like before starting statistics, you need to know two important terms. One is population, one is sample. So do you know what is population? Anyone? There are few people who mentioned yes, I know about statistics. So I'm expecting if you know the answer, what is population, what is sample? Anyone? Population means total number of people living in country, living in a state, living in a city. Okay. Okay, I'm giving you a hint. It is not about literal meaning of population. It is about statistical meaning. In statistics, what is the meaning of population and sample? Write down over chat. See, it's possible कि आपको नहीं पता है. That's fine. But you can guess. Like Saurav at least tried, right? So you try. गलती होने पे कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा. So try it out. Population and sample. Don't Google. फिर मेरा explanation समझ में नहीं आएगा शायद. So don't Google, don't ChatGPT.
Okay. Number of things, no problem. Mm, Uh, Prajwal, you are quite right. Let's say, yes, it belongs to population. It's a part of population, right, Prajwal? So now let's say, let me give you an example. Let's say, mm, mm, you are working on a topic. The topic is why children in India are suffering from polio. Okay. Now let's say the number of children suffering from polio, the number is 5 lakhs. Now, if you are working for that particular topic, you need to collect data from these people, from their parents, right? So your topic is why children in India suffering from polio. Now to know this, you need to collect data, you need to ask questions to these parents, right? Now it's not possible for you to ask question to all these 5 lakh parents, right? So what you will do, you will select a small part of this group, let's say 50,000, okay? And you will ask question to these 50,000 children, uh, sorry, to their parents, okay? Now this 5 lakh, which is your total or target population, okay? Just because you are not able to reach to all these 5 lakh people, it's not possible for you. You decided to take a small part of it. Okay. So this 50,000 is your sample and this 5 lakhs is your population. Okay. You can call it your target population, TP, as well. Are you at page number 2 in PPT? Hmm, no, in 3. Okay. Now it's showing. So Okay. please explain again if possible, because it's showing page number 2 when you were explaining us. आप पीपीटी मत देखो ना, मेरा बात सुनो. Okay, okay. हम्म. पीपीटी तो रेफरेंस के लिए है, आप मुझसे पूछो अगर समझ में ना आए तो. So this is your target population, which is 5 lakhs, and you are taking a small part of it, is let's say 50,000. Okay. This much, 50,000. Okay. So this is your sample, and this is your, this whole thing is your target population. Okay. So before starting statistics, you need to know these two things, sample and total population. Now coming to sample. While choosing sample, there are two techniques.
One is probability sampling, one is non-probability sampling. Okay. Now, what is probability sampling? It says every sample of the population has an equal probability of being included in the chosen sample. Meaning, let's say there are total 30 people, right? Now, let's say I'm announcing that I'm going to take a test tomorrow. Okay. Now, in that case, there are few people. Okay, I will take test of 10 people from here. Okay. Now, there are, let's say, few people who are already known to me. Meaning, let's say, okay, let's assume there are few people who are already known to me, who are, let's say, uh, Tushar, Zubair, Sohel, Prajwal. Okay, let's say. Now, if I choose those 10 people who are already known to me, that is a non-probability sampling, meaning all of you are not getting the chance to be a part of my sample, right? So there are 30 people, which is my total population. From there, I'm going to take test of 10 people. Now, while choosing those 10 people, I'm using a non-probability technique. What is that? I know, like, from these 30 people, there are 10 people I already know them. So I'm choosing those 10 people only who are already known to me. Okay, so in that case, other people, let's say Saurav, Gajanan, these people are not getting the chance to be a part of my sample. So that is called non-probability sampling, meaning all of you are not getting the equal chance. Okay, I'm giving you another one example. Let's say you went to a manufacturing company. Okay, and there um you went there to check that whether everything is going good or not, like all the products are like the manufacturing is uh, fine or not. ठीक है, and you went there and वहां पे जाके आपने जो एकदम सामने मिला, like सामने जो प्रोडक्ट मिला वो ही आपने चेक कर ली. ठीक है, so why you are doing this? Because this is convenient to you. Like आप convenience के हिसाब से आप काम कर रहे हो. So that is non-probable technique of sampling. जो आपको easy हुआ वो ही आपने कर लिया. ये 30 में से ये जो मैं अगर 10 पीपल चूज करूँ तो ये मेरे लिए इजी है, बिकॉज ये 10 लोगों को मैं पहले से ही पहचानती हूँ. तो इफ आई डू दैट, तो दैट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक, बिकॉज अदर पीपल आर नॉट गेटिंग इक्वल चांस. सेम अगर आप वो प्रोडक्ट चेक कर रहे हो, वो सामने जो है वो ही आपने उठा लिया बिकॉज दैट इज कन्वीनियंट टू यू, तो वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक हुआ. ठीक है, जो आपको इजी लगा वो ही आपने कर लिया. सेम आई एम गिविंग यू अनदर वन एग्जांपल. लेट्स से वो जो आपने हम जो वो रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे ना, दैट टाइम लेट्स से आपको 50 पेरेंट्स चूज करना है, राइट? तो आपने क्या किया, आपके सामने आपके क्लोज और नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स है, आपने वो ही हॉस्पिटल चूज किया. वो क्यों किया? क्योंकि वो आपके घर से पास में है. So in that case, you are not giving equal chance to everyone. So that is a non-probability technique of sampling. Clear? अगर आप जो easy हुआ वो ही किया, तो बाकी लोग को तो नहीं equal chance मिला ना. तो that is called non-probability technique. And if you choose, uh, if you give equal chance to everyone, that is called a probability technique, जिसमें सबका chance है वो sample में आने का. ठीक है. Now, in probability technique also there are different techniques. Probability के अंदर भी बहुत सारा techniques है. One is simple random sampling.
Okay, where you choose randomly. ठीक है, मान लो if I'm going to choose 10 people from these 30, so if I'm choosing randomly, मैं scroll कर रही हूँ और जो भी नाम सामने आ रहा है I'm taking that name. So there is no rule, no equation, no calculation. मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. I'm just taking names randomly. अगर आप सामने आ जाए तो I will take your name. अगर दूसरा कोई आ जाए तो I will take her name. So in that case, here I'm using random technique. कोई इक्वेशन, कोई टेक्निक, कोई सिस्टम कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ. आई एम टेकिंग नेम्स रैंडमली. दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, another one, let's say can you see my board? Yes. Another one is stratified. What is the stratified technique? Here we create strata. Okay, meaning let's say you have a classroom. Okay, a classroom full of boys and girls. Okay, now first we'll differentiate two class. Okay, similar kind of people will group them in two different strata. Now let's say in one group I'm keeping boys and in one group I'm keeping girls. Okay, now in the next step, first we'll create strata. Okay, we'll tell you 2-3 techniques. Okay, rest you can read from other blogs. Okay, strata creation, say like from a whole classroom you have created one boys group, one girls group. In two you are going to do simple random sampling. Okay, so you are going to take few people from here and few people from here randomly. Let's say 5. So this is your sample. Another one called multi-stage. In multi-stage, what we do? Let's say we have created 3 groups from that classroom. Okay. Now, in step 1, we'll do simple random sampling. First, create 3 groups. Okay. 3 groups I have created randomly, and now I'm choosing one of it. Let's say I'm choosing this one. Okay, and in second step, simple random sampling for selecting 6 people from that group. Let's say here I have 50, here I have 50, here I have 50. Now I have chosen one group, this one, or a group, and now from this group I'm going to choose 10 people randomly. Okay, let's say simple random sampling from that. Okay, so there are
so many steps involved. First, you have created 3 groups, then you have chosen one of it, and then from that group, you are choosing 10 people or 20 people or 30 people randomly. Okay, this is another one technique. One is systematic. This is very easy. Let's say you have decided to choose 5th student from every row. So let's say there are benches like this. So you are choosing, these are students. You have decided to take 5th one. So 1, 2, 3, 4, 5. Selected 1, 2, 3, 4, 5. Selected 1, 2, 3, 4, 5. Like that. Okay. So these are your samples. This is called systematic sampling. Okay. You can write the rule. You can decide what system or what rule you want to follow, and accordingly you can take their name. Okay. This is another one. Class. Here what we do, here we create, let's say, 4 groups. From that class, I have created 4 groups, and now I'm going to choose one of them randomly. This is my sample. Okay, any question? Cluster, systematic, multi-stage, stratified, these are different techniques of सिस्टमेटिक बता दो एक बार. systematic में आप कोई भी system select कर लो कि मुझे हर 10 नंबर बंदे को लेना है, तो आप शुरू से you take the 10th person, और मान लो आप जब प्रोडक्ट चेक कर रहे हो, that time also you have decided to take every 15th or 10th or 25th, whatever your system is. You can select your system first, you can decide your system first, and accordingly you can choose that person. Okay, this is about your sampling. Now next is, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. Done. Now coming to type of data. Okay. When talking about type of data, तो ये मुझे क्यों जानना है? Why we need to know about different types of data? Because जब आपको data मिलेगा ना, you need to know that what type of column is this, what type of data this particular column is holding. तब जाके you will be able to understand कि ये particular column के ऊपर क्या use करना है. How I can describe this particular column. So if you don't know what type of data it is, it will be difficult for you. तो जो भी आपको कॉलम है, मान लो कॉलम में नेम है, एक कॉलम में नेम है, एक कॉलम में एज है, एक कॉलम में फेवरेट कलर है, एक कॉलम में स्किल्स है. ओके, सो व्हेन यू आर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ कॉलम्स, यू नीड टू नो कि ये जो नेम कॉलम है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस.
ये जो एज कॉलम है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस? ये जो तुम्हारा स्किल्स का कॉलम है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज? Okay, now there are two type of basic two types. One is numerical, one is categorical. Now numerical meaning where numbers involved. मान लो तुम्हारा एज कॉलम, मान लो तुम्हारा सैलरी कॉलम. These are numerical data where we have numbers. Another one is categorical data where we have categories. Let's say your favorite color, your skills. These are categories. Okay, जहाँ पे number नहीं है. Okay. Now, when talking about numerical data, there are two different types. One is discrete, one is continuous. Do you know what is discrete number? Hmm? What is did you ask, discrete? ma'am? Sorry. What did you ask? What is discrete number? Discrete. तो नहीं पता है. No sure. Not margin between two numbers. Countably finite Mm-hmm. number of people in this class presently. Yeah, that is a discrete number. Good. But my question is like the definition, not example. Continuous of number 1, 2, 3. Not able to understand person. Yeah, 1, 2, 3, 4 are discrete numbers, but continuous of many. No, Jay. Okay. So discrete numbers meaning whole numbers. मान लो अभी coming to the example. जैसे किसी ने बोला ना कि the number of people in the session. That is a discrete number. Yes, that is a discrete number. Let's say if I ask you how many members are there in your family, तो आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 7. It will never be 4.5. It will never be 5.5. So if the question
is how many members are there in your family, the answer will be always in discrete, right? If I ask you how many dresses you have, the answer will be in discrete value. And continuous meaning, if I ask you, what is your salary? If I ask you, what is the price of the house? These are continuous number where we have decimal. Okay. Now in categorical, there are Can you repeat continuous, please? continuous meaning where we have decimal number, meaning let's say 25.123. Let's say 25.657. 79.123, like that. These are continuous numbers where we have decimal. Like a float type, no, ma'am. Hmm? Like a float type numbers. Yeah. Okay. Now, continuous also we can divide into two parts. जिस One is नंबर के पॉइंट के आगे 1 2 3 4 की सीरीज है उससे कंटिन्यूस कहेंगे. नहीं. नहीं, जिस नंबर में डेसिमल रहेगा या मान लो डेसिमल हो सकता है, जिसका आंसर डेसिमल में आ भी सकता है. देखो सैलरी, मान लो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर सैलरी, यू सेड लेट्स से 25,000, ठीक है. बट 25,000.07 भी तो हो सकता है. इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर सैलरी, तो वो कंटिन्यूअस में आंसर आएगा. मे बी तुम्हारे आंसर में डिस्क्रीट वैल्यू है, बट वो कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है. So if I ask you what is your salary, your answer will be in continuous value. But if I ask you how many members are there in your family, वो तुम चाहो भी तो कंटिन्यूअस में नहीं दे सकते, राइट. उसका आंसर डिस्क्रीट में ही होगा, क्योंकि उसका आंसर कभी भी 4.5 तो नहीं हो सकता, राइट. उसका आंसर कभी भी 4.75 तो नहीं हो सकता. गॉट इट. कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल है, दैट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू. एंड जिसका आंसर हमेशा होल नंबर में होता है, दैट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू. तो अभी कंटिन्यूअस वी कैन, देयर आर मोर पार्ट्स ऑफ इट. लेट्स से कंटिन्यूअस को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो डिफरेंट टाइप में. वन इज इंटरवल, वन इज रेशियो. अभी इंटरवल एंड रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, but there is one difference. In interval, 0 is arbitrary, meaning 0 का भी एक मतलब है, but in ratio में 0 का मतलब 0 meaning nothing है. Okay, I'm giving you one example. Let's say if I say if I ask you what is the temperature there, okay, you said 0 degree Celsius. Okay, अभी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे टेम्परेचर ही नहीं है, right? There is a temperature and that temperature is 0 degree. So 0 degree consists of a type of temperature. तो 0 डिग्री भी एक टेम्परेचर ही है, इसके मतलब नथिंग नहीं है. Got it? But if I ask you what is your weight or how many how much money you have, if you say 0, so it means 0 meaning nothing, मेरे पास कुछ भी नहीं है. मान लो if I ask you what is the weight of that product, if it is 0, 0 meaning उसका weight ही नहीं है, 0 it is. आपका weight तो माइनस में नहीं हो सकता. If it is 0, it means that particular product has no weight. But if I say the temperature is 0 degree, it means it means there is a temperature and that is 0 degree. It is not nothing.
So this is the basic difference between interval and ratio. Interval में 0 is arbitrary, meaning 0 holds a different meaning. But when it comes to ratio data type में 0 meaning nothing. 0 has an absolute meaning. And in interval 0 has an arbitrary meaning. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा रेशियो का एग्जाम्पल है जिसमें 0 का मतलब नथिंग है. उसका एग्जाम्पल से मान लो वेट, हाइट, लेंथ. If length is 0, meaning there is no length. If height is 0, it means there is no height. If weight is 0, it means there is no weight. But same you can't say for 0 degree Celsius. Okay, so that is two different types of continuous data. Now when coming to categorical data, there are one is dichotomous, meaning yes or no. इसका आंसर हमेशा yes or no ही होगा. Okay, are you married? Answer will be yes or no. Okay, are you working somewhere? So answer will be yes or no. इसका दूसरा कुछ आंसर हो ही नहीं सकता. That is called dichotomous. Okay, data. And तुम्हारा another one is nominal. That holds names. Okay, मान लो तुम्हारा नाम का एक कॉलम है. That is a nominal data. तुम्हारा कहाँ पे रहते हो? That is also nominal. Okay, your place name, that is a nominal data. तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? That is also nominal. Okay, and what is ordinal? Ordinal meaning where we have order. तो आपका एक कॉलम है जिसमें तुम्हारा मान लो तुम्हारा ड्रेस का साइज लिखा हुआ है, टी शर्ट साइज लिखा हुआ है. ओके, यहाँ पे इट्स लाइक, ओके लेट मी शो यू. Now let's say we have two columns, name, name, quality, color, okay. This one, where is it? Okay, color is let's say. Okay, now color, okay. Now what type of data is this? First column over chat. मैम आपकी वॉइस ब्रेक Hmm? क्या? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम. अभी ठीक है? परफेक्ट हाँ ठीक, परफेक्ट. अब ठीक है. हाँ, तो what I'm asking,
I'm asking that this is the data, let's say we have. So what type of data is this one? आप एक एक करके मुझे बताओगे कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है? Nominal, ओके, दिस वन, numeric, न्यूमेरिकल, गुड। न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा टाइप में आएगा ये? District. district. डिस्ट्रिक्ट। ओके, कंटिन्यूस में आएगा, ये कंटिन्यूस में आएगा मैम, क्योंकि एज बढ़ता है ना, हाँ बढ़ता इसलिए उसमें है पॉइंट इसलिए नहीं नहीं, आएंगे, लेकिन बढ़ता है इसलिए बढ़ता नहीं, बट इसमें पॉइंट तो आ सकता है ना। पॉइंट आएगा तो फिर वो इसमें डिस्ट्रिक्ट कैसे में पॉइंट आएगा? पॉइंट नहीं तो बच्चे करेगा तो कैसे बोल सकते हैं अभी। ऐसा हो जाएगा। नहीं वो डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा शायद से, क्योंकि एक ही नंबर आता है ना, पॉइंट में तो नहीं आएगा। तो ओके, सैलरी भी बाकी क्या न्यूमर बोल रहे हो? सर होल नंबर इसीलिए शायद। Yes, ma'am. District. अदर्स? डिस्ट्रिक्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट ही, District, ma'am. डिस्क्रीट इट इज। डिस्क्रीट। ओके। ओके, नाउ वन थिंग लेट मी क्लियर। तो कोई बोल रहे हो इट कम्स अंडर डिस्क्रीट एंड द एज कैन बी 30.5 एज वेल, 25.5 एज वेल, राइट? हो सकता है ना, मेरा 25.5 है या मेरा मान लो 29.9 है, हो तो सकता है ना, राइट? वो 25 सिक्स मतलब मंथ में पकड़ 25 सकते इयर्स, हैं। सॉरी। यस मैम, मंथ्स में पकड़ सकते। अभी एज बताया है डेटा टाइप में, तो एज अभी तो उसका तो 30 एज और 6 मंथ्स ऐसा पकड़ के चलो, तो वो हो सकता है कंटिन्यूस में यस, पकड़ा। यस तो मैम। अ पर्सन माइट बी इन लाइक 26.5, राइट? हो सकता है। तो यस। ये जो एज कॉलम है, वी कैन हाँ। कंसिडर दिस अंडर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस बोथ, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एज। ओके, अगर इफ इट इज 30 then it is discrete, and if it is 30.5 then it is continuous. So if I ask you what type of data is this, what type of column is this, your answer should be it comes under discrete and continuous both, depends on the situation. ओके। Okay, coming to third one. ये भी उसी में आ सकता है। ये दोनों में? कंटिन्यूस में आएगा, कंटिन्यूस में आएगा ये। और ओके, इसमें भी आएगा इसमें भी तो पॉइंट डिस्क्रीट लग का। सकता है फिर। यस यस, लग सकता है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी आएगा, दोनों में आएगा वो। न्यूमेरिकल डेटा है बोला गया। फिलहाल मैम जो आपने वैल्यू दिया है वो डिस्ट्रिक्ट में है, अगर पॉइंट में रहता तो उसे हम कंटिन्यूस बोल सकते ओके। नाउ इन दैट केस, देखो ये मैं मोरलेस जैसा होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट वे, ताकि आपको भी अगर सेम इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, ओके, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ कि ये थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस है, तो थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कमिंग टू द सैलरी पार्ट, सो यू कैन से दैट सैलरी कम्स अंडर कंटिन्यूअस डेटा टाइप, ठीक है? जब मैंने कंटिन्यूअस के एग्जांपल दिया था, पहले मेरे मुंह से सैलरी ही निकला था, राइट? यहाँ मान लो या कोई घर का प्राइस कितना है, so that is also comes under continuous data, ठीक है? Because salary always comes with a range, right? And apart from that, most of the time it comes with point, comes with decimal. So we can say that salary mostly comes under continuous data type, but if you have like whole number, discrete value which is fixed, in that case we can put them under discrete type. Okay, so generally we'll consider salary under continuous data type. Okay, next, color.
जल्दी बोलो. Color comes under categorical data and categorical के अंदर कौन सा टाइप में आएगा? I'm showing you the PPT. एट्रीब्यूट मैम। this attribute एट्रीब्यूट में आएगा मैम। attribute में आएगा। Others, if you remember what is dichotomous. डाइकोटोमस में तो यस और नो का आंसर आता है ना। Very good. तो उसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा, राइट? yes मैम हाँ, उसमें तो नहीं होगा। ऑर्डिनल हो सकता है मैडम, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल इसमें के डेफिनेशन बताओ। तो मैम ऑर्डिनल में टी शर्ट के साइज ये सब आते हैं मैम, आपने बताएंगे। जैसा हाँ दिखाया तो आपने बताया इससे पहले ना। हाँ तो अब बताओ क्या बताए मैंने। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल दो। मैम जैसे कि टी शर्ट के साइज स्मॉल, एल, मीडियम एंड ऑल। वेरी गुड। वेयर वी हैव एन ऑर्डर, या मान लो कि तुम्हारा पोजीशन क्या है ऑफिस में, न्यू ज्वाइनी, मैनेजर, सीईओ, देयर इज एन ऑर्डर। किसी में भी अगर ऑर्डर है, सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। तो कलर्स में कहाँ से ऑर्डर आया? इज देयर एनी ऑर्डर इन मैडम फेवरेट कलर? एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। नॉमिनल का जो होता है इसमें सिर्फ नाम वगैरह ही आएगा ना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा ना? हम्म नाम से रिलेटेड मतलब नाम ही रहेगा। हाँ, नाम मतलब सब चीजों का नाम। हाँ, कोई तो कुछ भी मैंने थिंग्स। हाँ नॉमिनल एग्जाम्पल में होना मैंने चाहिए मैम बोली फिर थी, तो। the nominal का एग्जाम्पल्स है योर नेम्स, कलर्स, योर where you live, कहाँ पे रहते हो उस जगह का नाम, दैट आल्सो कम्स अंडर नॉमिनल। देश का नाम नॉमिनल, फेवरेट कलर नॉमिनल, आपका नाम नॉमिनल। कलर फिर ओके। नॉमिनल में आएगा मैम। हम्म ओके एंड ओके, दिस ऑर्डिनल। वन इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। राइट? ऑर्डिनल। हम्म। सेम ही है जो हमने डिस्कस की। This is how our data looks like, where we have rows, where we have columns. This is one small example. Okay, we'll create frequencies like this to understand statistics. Try to answer this. 1 2 3 4 लिख के आंसर्स लिख के चैट में भेजो। यू हैव 2 मिनट्स। आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है। 1 बोल के इसका जो आंसर है वो, 2 बोल के इसका जो आंसर है वो, 3 4 वैसे लिखना है। स्टार्ट।
Gauri, no. Shoaib, no. I'm not asking your color of color of your eyes. I'm not asking how old are you. I'm asking if the question is how old are you, then the answer will be of which type, which data type. Rajwal, guys, I'm not asking all these questions to you. I'm asking what type of data it is. इसका बताना है कि कौन से डेटा टाइप में आता है सारे 1 2 3 4। हाँ हाँ, मैं जान के क्या ही करूंगा। हाउ टॉल आर यू? Ma'am, I send you. Do you know these graphs? Do you know how to draw bar graph manually? Yes, ma'am. मैंने सिखाया था क्या? नहीं, आपने तो अभी तक नहीं सिखाया है। Others? नो। यस मैम। How मैम many no? आपने नहीं सिखाया पर सीखा हूँ पहले। स्कैटर प्लॉट पाई ग्राफ एक्सेल में यूज होता है वैसे। Okay, तो आपको पता और है जो पावर ग्राफ। बीआई में भी होता है ना? मेरा पावर एक्सेल और पावर बीआई दोनों नहीं हुआ। हाँ। वेरी गुड। तो आपको जो डेटा कैसा होता है एंड द ग्राफ यू आर गेटिंग, हाउ टू गेट दैट, ये आपको पता है, राइट? एनीवन हु डोंट नो? आई एम। हम्म? मुझे नहीं आता है मैडम, मैंने नहीं किया है ये। और किसी दूसरा? तुषार को छोड़ के और कोई? नो, स्कैटर प्लॉट और बॉक्स विस्कर प्लॉट का नहीं पता। स्कैटर प्लॉट और विस्कर प्लॉट।
ओके, मैम so आपने let's see. आंसर नहीं बताया जो क्वेश्चन दिया था आपने। हाँ, सबने राइट आंसर ही दिए। फिर भी एक बार आप अपनी साइड से स्पेल कर दो। आपने क्या लिखा है बताओ? मैंने लिखा है फर्स्ट वाले में डिस्क्रीट लिखा है, सेकंड वाले में डिस्क्रीट लिखा है, थर्ड वाले में एट्रीब्यूट, फोर्थ वाले में नॉमिनल। ओके, एट्रीब्यूट का डेफिनेशन क्या था? यस और नो, So if मेल I या ask you फीमेल, which gender, sorry, मेल या फीमेल, मैं ये हाँ, तो अगर मैं आपको पूछूं which gender do you identify with, आप yes बोलोगे, no बोलोगे? ओके, तो ये बुलियन वैल्यू जैसा है क्या? हाँ, ओके, नॉमिनल नॉमिनल में आएगा नॉमिनल। ऑर्डिनल में आएगा मैम। which gender do you identify with, कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल नॉमिनल में। जेंडर में ऑर्डर होता है क्या? नहीं मैम, ऑर्डिनल में आता है। ऑर्डिनल ऑर्डिनल में, यस ऑर्डिनल में तो ऑर्डर ऑर्डिनल में होता है, आता है। जेंडर में ऑर्डर होता है? नहीं, नो जेंडर में मैम। ऑर्डर, नॉमिनल में आएगा। मैडम वो शीट दिखाओ ना एक बार से कि थर्ड नंबर। और मैम ये फर्स्ट और सेकंड का कंटिन्यूस आएगा मैम, क्योंकि एज भी आपने बोला कभी पॉइंट में हो सकता है, और मैम हाइट तो पॉइंट में होता ही है 5.6 फीट एंड ऑल, इसलिए। लास्ट वाला एट्रीब्यूट में आएगा। व्हाट कलर आर योर आईज, ये एट्रीब्यूट में आएगा। नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। और नॉमिनल आंखों का नॉमिनल कलर क्या है, उसका आंसर यस नो होगा। ये नॉमिनल में होगा शायद, कि कलर अलग अलग भी हो सकती है ना। आपने नॉमिनल मैम का एक बताया बार था वो नहीं। 6 नंबर शीट शीट लगा दो ना। आप स्क्रीनशॉट ले 6 लो। नंबर, 6 6। हाँ हाँ, ये हाँ। आप लास्ट में पीपीटी शेयर कर देना इफ पॉसिबल। कर दूंगी। एंड 1 एंड 2 में क्या आंसर दिए आप लोगों ने? कंटिन्यूस, मैंने तो कंटिन्यूस ही दिए। फर्स्ट में ओके, डिस्क्रीट और ओल्ड, हाँ, ओल्ड डिस्क्रीट तो बोथ डिस्क्रीट बोल दिया है रहे मैंने, हैं। पहला दूसरा दोनों। सेकंड वाला डिस्क्रीट दिया है, पहला डिस्क्रीट और कंटिन्यू दोनों। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, फाइन। मैंने मैं थर्ड फूड एक्सप्लेन करो ना एक बार, समझ में नहीं आ रहा उसको थर्ड में क्यों क्या होगा। है, तुम्हारा जेंडर क्या है, राइट? तो जेंडर में क्या क्या आएगा, मेल और फीमेल, राइट? तो मेल और फीमेल इफ द क्वेश्चन इज, तो उसमें वो कौन से कैटेगरी में आएगा? तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? एक है नॉमिनल, सॉरी न्यूमेरिकल, और एक है कैटेगरिकल, राइट? कैटेगरीज आ रही है इसीलिए। हाँ, ये नंबर तो नहीं है, राइट? ये नंबर तो नहीं है, राइट? तो न्यूमेरिकल तो कभी भी नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज कैटेगरिकल, तो ये कैटेगरिकल में आएगा। अभी कैटेगरिकल के अंदर क्या क्या है? नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, राइट? तो इसमें कुछ ऑर्डर तो नहीं है, तो ये नॉमिनल ही होगा। नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल, क्लियर? जैसा मैंने आपने बोला था कहा था कोई भी नॉमिनल नाम, में नाम वगैरह आएगा। कोई भी नाम आएगा, कोई भी कलर आएगा, तो दिस जेंडर आल्सो कम्स अंडर दोज नेम्स। कोई भी कैटेगरी इसमें देखो, द डेटा कैन ओनली बी कैटेगराइज। तो मेल ये फीमेल, ये दो चीज, दो कैटेगरी है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट कलर, जितना सारा कलर्स है ऑल दोज आर कैटेगरी, तो उसमें से कोई एक आपको पसंद है। अगर मैं पूछूं सेम वो कौन सी फेवरेट कलर है, वैसा ही तो 4 नंबर, ये फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, वैसा ही तो है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। व्हाट कलर आर योर आईज, तो वो भी नॉमिनल उसी में में ही आएगा, आएगा फिर बिकॉज, नॉमिनल में आएगा। हाँ, जो आपका आंसर है वो एक नेम ही है, ठीक है? दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चन,
तो इसलिए मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स के खत्म जिस दिन खत्म होगा ना नेक्स्ट वीक में, तो उस दिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरव्यू का क्वेश्चन दे ये दूंगी। मैंने किया ही नहीं, ग्राफिक टेक्निक वगैरह। हम्म। स्कैटर प्लॉट या पाई चार्ट वगैरह मैंने नहीं किया मैडम, मेरे से क्लास मिस हो गया था वो वाला। हाँ, तो इसमें गलती किसका है? ऑब्वियसली मेरा ही है। हम्म। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा देख लेना वो वाला सेक्शन। ओके चलो। So I'm drawing a bar graph. How to do this manually? 5 categories है. One is pen. Okay. Bar graphs में क्या होता है? This is x axis and this is y axis. X axis में we show the category. जितना सारा categories है, that we show in x axis. And जो numerical value है, that we show in y axis. अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों हमने ये डेटा टाइप्स में पढ़ना जरूरी था. नाउ यू नो व्हाट इज कैटेगरिकल डेटा. तो अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस में कैटेगरीज दिखाना है, यू नो कि इसमें से कौन सी कॉलम दिखाना है, राइट. देन वाई एक्सिस में विल शो न्यूमेरिकल डेटा. ओके, नाउ 1 2 3 4 5 categories we need to show here. तो अभी when you are doing it manually, आप कोई भी साइज ले सकते हो. कि मुझे मान लो कि बार जो जो बार मैं क्रिएट करूंगी दैट आई विल टेक 1 सेंटीमीटर का, एंड इसके बीच में जो गैप है दैट आई विल गिव 0.5 सेंटीमीटर. ओके, कितना सारा है? 5 3 4. या आप खुद के हिसाब से ये कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज हाउ लाइक व्हाट शुड बी द size of your bar that you can control. So this first one 10. Okay, 10 to 30 है. मान लो scale I'm taking 10 20 25 and 30. So first one है 10 10. Okay, next 15. Okay, next 20. $25. $30. The same thing you do with Power BI, the same thing you do with Excel, the same thing we do with other data visualization tools, right? तो अभी ये हमें खुद से करना पड़ा, and that there you just need to put the data and you need to mention what diagram you want to draw, right? बाकी सब वही डिसाइड कर लेते हैं, स्केल एंड एवरीथिंग. कॉपी. In our school days we used to draw like this, right? Manually.
यानी यहाँ पे एक हेडिंग देना पड़ता है, लाइक व्हाट यू आर शोइंग showing the number. बड़ा मैम इंटरव्यू में इतना इतना सब कुछ इतना सब कुछ मतलब सपोज प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा क्या उधर ही, ये सब बताना जरूरी है? ये अगर आपको पता है ना ये कैसे ड्रॉ होता है, मान लो हाँ कोई इंटरव्यूअर आपको पूछ भी लिया कि कैसे हाँ करता है, आपको पता है, यू कैन थिंक ऑफ दी स्टेप्स एंड यू कैन एक्सप्लेन, राइट? बट आप अगर आपको पता ही नहीं है कि ये स्केल कैसे लेता है, ये जो बार हमें मिल रहा है ये कैसे मिलता है, इफ यू डोंट नो मैनुअली देन आप बोलोगे ही कैसे, राइट? ये मान लो आपको नहीं पता है ये कैसे होता है, आपको सिर्फ पता है एक्सेल में अगर मैं ये डेटा डाल दूं मुझे ये डायग्राम मिल जाएगा। तो मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ बार डायग्राम, आपने बोल दिया यस, तो बताओ स्टेप्स बताओ कैसे करते हैं, आई एम गिविंग यू अ डेटा, 3 लाइन का मैं एक डेटा देती हूँ, बताओ ये कैसे करते हैं। नाउ यू डोंट नो कि एक्स एक्सिस में कैटेगरीज लेते हैं, यू डोंट नो कि वाई एक्सिस में न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है बार ग्राफ में। तो आपने क्या किया, आपका जो एक्सेल में जो स्टेप्स है वो वो बता दिया आपने। एज ए ओके इंटरव्यूअर वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्सेल में बार ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे जानना है कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ लाइक मी, आई एम नॉट आस्किंग यू के ड्रॉ करके बताओ एकदम बोर्ड लेके, बट आई एम मतलब ट्राइंग टू कौन से नो कि कैटेगरी, मैम मतलब कौन से कैटेगरी वाइज आता है डेटा में वो भी हाँ बताना है। कैटेगरी यस वाइज भी, एंड आपको पता भी है कि ये बार ग्राफ जो आपको स्टेप्स एक्सेल में बताने मिलता है। उनको एक्स में ही आता है, वाई में आता है। मतलब आपको पता है या नहीं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन वो ही देखने के लिए द इंटरव्यूअर माइट आस्क यू, एंड दैट ओके टाइम ये आपको ड्रॉ तो नहीं करना है। अगर अभी देखो, अगर अभी तो आपको पता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करने के भी लिए बोल दूं तो आप कर दोगे, राइट? यस अगर मैंने आपको पूछा ओके यू टेल मी द स्टेप्स, तो आप ये याद करके स्टेप्स भी बता सकते हो अभी, कि मेरे पास जो भी कॉलम्स है उसको मुझे ऐसे लेना है, 2 कॉलम को आई कैन रिप्रेजेंट विथ माई बार ग्राफ विथ अ सिंपल बार ग्राफ। भी बार ग्राफ बहुत टाइप का होता है, आपको पता है कि एक के ऊपर एक एंड साइड बाय साइड कॉम्पोजिट कॉम्प्लेक्स बार ग्राफ, ये सब होता है एक्सेल में, आपको आपने सीखा ही होगा, राइट? दैट टाइम इफ यू यस हैव मैम मोर कॉलम्स तो यू कैन डील विद दैट एज वेल। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, आपको स्केल सेम रखना है, ये वाला स्केल सेम रहेगा, यानी इसके बाजू में मान लो और एक कॉलम है जिसपे नंबर्स है, ओके? अगर वो कैटेगरिकल कॉलम है वो तो आप नहीं दिखा सकते इसमें, राइट? आप अगर मान लो कि और एक कॉलम है आपके पास दैट इज अ कैटेगरिकल कॉलम, वो आप कैसे वो तो दिखाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो दिखाना रहेगा तो उसको बाहर ही चेंज करना पड़ेगा, पिवट टेबल में दिखा सकता एग्जैक्टली, हूँ दिखा। तो ये बार में तो पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको पावर में दूसरा तो बनाना पॉसिबल पड़ेगा। नहीं है। हाँ, यस तो अगर आपके पास और एक कॉलम है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है वो आप दिखा सकते हो सेम स्केल रख के, स्केल नहीं चेंज ये होगा, ये सेम स्केल में आपको वो ये आप बाजू में भी और एक बार बना सकते हो, इससे बाजू में, हम्म या तो फिर इसके ऊपर भी बना सकते हो। तो ये सब यस तो आपको मैम पता है, बट आई जस्ट वांट यू टू नो ऑल दी स्टेप्स, ताकि इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे आता तो है बट इन एक्सेल, मुझे आता तो है बट इन पाइथन, लाइक विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब ओनली आई कैन क्रिएट, इट शुड नॉट यस बी मैम लाइक। यस मैम यस मैम नाउ कमिंग टू स्कैटर प्लॉट, बाकी बार ग्राफ तो सॉरी पाई ग्राफ तो इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विथ 360 डिग्री, ये आपको 100 में इतना है तो 360 में कितना होगा आपको परसेंटेज निकालना है, एंड फिर यू नीड टू कैलकुलेट एक 100 में, मान लो वी हैव 3 प्रोडक्ट, वन इज 50, वन इज 50, वन इज 60, वन इज 70, ओके? इफ यू हैव 3 प्रोडक्ट्स एंड ये तीनों आपको पाई ग्राफ में दिखाना है, तो व्हाट यू विल डू, we'll find out the summation of this 180,
Okay. Now you need to calculate the percentage of each. Okay. कि 180 में 50 है, then 100 में कितना होगा? या 180 में 50 है, then 360 में कितना डिग्री होगा? 360 why? Because the whole circle is 360 and 360 के अंदर ये वाला पार्ट कितना डिग्री में होगा? मान लो ये 50 है, 50 डिग्री, तो यहाँ पे 0 लगा के आपको 50 डिग्री तक लेना है. Okay? And for each you need to calculate. तो 180 में 50 है तो 360 में कितना होगा? 180 में 60 है तो 360 में कितना होगा? 180 में 70 है then 360 में कितना होगा? Like that you need to calculate and write. Coming to scatter plot. Scatter plot भी बहुत easy है, but here we represent both numerical data. One is x, one is y. मान लो x is years of experience and y is salary. Okay. 10, 12, 13. Okay. Now I'm drawing scatter plot. What is the criteria? Both numerical. If you have one categorical, one numerical, you can't create a scatter plot. Okay. So here you need to represent years of experience. And here salary. Okay. Now first one is 10 and the highest value is 22. तो मुझे 10 to 22 ये लाइन के अंदर दिखाना है, right? So I can start with okay. Mm, mm, eight, eight, um, okay. And here 5 to 21. Okay. Okay. Now first one is see. First one is 10. First value is 10 and 5. So we'll go 10 and now 5. So this is my comment. Next 12 and 10. So 12 and 10. 15 and 12. 15 and mm, can be more accurate with scale, but I'm using randomly. Okay. Next 18 and 19. 18, 18, 19.
2020, 22, 21. Settle up. Okay. Now let's imagine we have more data points and those points are coming like this. From the pattern we can understand the data points will be like this. We have these many data, let's say. So from this we are getting pattern like this. Now if we get something like this, forward moving, it means if my x is increasing, my y is also increasing. How to check that? Okay. So take any two data points. Okay. 1, 2. Okay. Now check what is the value of x of that point. So this is A, this is B. So this is on x-axis, this point is xa and this point is xb. Right? Now check the value of y of that point. Y is y b. Now you go from this point to this point. Okay, A to B I'm going. Now if I'm going from A to B, here also I'm going from here to here, right? So if I check here to here, it means the value of x is increasing, right? From xa to xb, the value of x is increasing. From 14, it's your 18.5, right? Now in that case, x is increasing, right? Now if you check the same thing on y, if I go from ya to yb, here also the value of y is increasing. If I go from here to here, then also the value of y is increasing. It says that if the value of x is increasing, y is increasing. Meaning, if your years of experience is increasing, your salary is also increasing. So why we create this scatter plot? To understand the relationship between two variables, two numerical variables. From this diagram, we can understand that yes, there is a relationship between years of experience and salary. And what type of relationship is that? It is a positive relationship. Strongly positive relationship. Meaning अगर आपका years of experience बढ़ेगा तो आपका salary भी increase होगा. There are points जहाँ पे आपको ऐसा relationship मिलेगा is where it's coming like this. It means अगर x increase हो रहा है तो मेरा y decrease हो रहा है. मान लो अगर आपका age बढ़ रहा है तो आपका memory कम हो रहा है. Okay, memory power is decreasing. तो वहां पे अगर आप ऐसा डायग्राम क्रिएट करोगे स्कैटर प्लॉट में, तो you will get something like this. And from that we can understand if my x is increasing, y is decreasing. So they are having negative relationship. Got it? कैसे एक्सप्लेन करना है? तो अभी ये तो हमने मैनुअली क्रिएट करके फिर एक्सप्लेन किया. तो अभी ये मैनुअली आपको क्रिएट ही नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटली. You are going to create this with the help of Excel, with the help of Power BI. वहां पर तो ये सब तो स्टेप्स नहीं करना है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन ये डायग्राम से आपको क्या पता चला, why we are creating this. After creation, what is the inference, what is the conclusion, क्या समझ में आया आप?
वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? यस। यस मैम। ओके, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, वी हैव दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाइट एंड फ्रीक्वेंसी। ये हाइट में कितने लोग हैं, इज अ एग्जांपल ऑफ डेटा बेसिकली। बार ग्राफ, पाई चार्ट, दिस इज अ हिस्टोग्राम। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, बट हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस है। यू गेस व्हाट इज दैट? आप ये पढ़ भी सकते हो, लाइक पढ़ के भी अगर समझ में आए। मैम ये क्वांटिटी वेरिएबल्स में यूज होता है ना ज्यादा करके। किसमें? क्वांटिटी 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 रहता है ना, मतलब क्वांटिटेटिव। हाँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। वहां पे भी आप लाइक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कर रहे थे। पर मैम वो न्यूमेरिकल में था, मतलब इधर कैसे वो न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब मैं सम लाइक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्वालिटेटिव डेटा मीनिंग योर कैटेगरिकल डेटा, जो यस। तुमने पढ़ा ना वहां पे न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल। तो हाँ न्यूमेरिकल है तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेटा एंड हाँ। कैटेगरिकल तुम्हारा क्वालिटेटिव डेटा। ओके, क्वालिटेटिव डेटा मतलब ये अंदर के अंदर ही दो अलग पार्ट्स है क्या उसके अंदर ही? नहीं, मतलब तुम्हारा न्यूमेरिकल डेटा ही तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेटा है। ओके ओके ओके। क्वांटिटी है, कुछ नंबर्स है, न्यूमेरिकल। नंबर से। यस हाँ, यस वो यस। सिमिलर थिंग है। हाँ। ओके मैम। तो आप समझा दो एक बार। हम्म। सी, वन इज बार ग्राफ, वन इज हिस्टोग्राम, बोथ आर सेम, दिखने में भी सेम है। बट एक चीज इसमें डिफरेंस है, दैट इज बार ग्राफ के दो बार के बीच में एक बार होता है, राइट, एक गैप होता है। व्हाई? क्योंकि नीचे जो एक्स एक्सिस में हम कैटेगरिकल वेरिएबल शो करते हैं, राइट, पेन, कॉपी, पिन, जो हमने क्रिएट किया था। तो दोज आर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये इसलिए इन दोनों के बीच में एक गैप है। बट हिस्टोग्राम में व्हाट वी शो, हिस्टोग्राम में वी शो अ रेंज। लेट्स से वी हैव जितने सारे लोग हैं ये सेशन में, मान लो 30 पीपल। तो मैंने क्या किया, तुम सबका एज मैंने लिख लिया, दैट इज माय डेटा। ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग 10 नंबर। ये सब तुम लोगों का एज है मान लो।
Okay. Now, what I'm going to do, age and frequency. ठीक है, अभी लोएस्ट वैल्यू क्या है 19, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 29. Okay, so what I can do, I can create a range 19 to 21. मैम ये 2 नंबर का गैप क्यों लिया अपन ने? क्योंकि ये दो नंबर के बीच में 10 का गैप है, तो 10 इंटू 5 10 मैम 10 फ्रीक्वेंसी इसको ही बोलेंगे ना, 19 से 21 का 2 फ्रीक्वेंसी है, 21 हाँ से हाँ 20 हाँ, विल उसमें कम टू दैट, फ्रीक्वेंसी। रुक जाओ थोड़ा. हाँ, तो ये दोनों के बीच में 10 का गैप है, तो ये 10 मैं अगर दो के गैप में लूँ तो मुझे 5 डेटा पॉइंट मिलेगा, 5 बार में क्रिएट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 का गैप लिया है. अगर आप 3 का गैप लोगे तो आपको दिक्कत होगा लास्ट में जाके, तो ये गैप के हिसाब से यू कैन टेक. इसके जगह आप 5 का भी गैप ले सकते हो. 5 का गैप लेके, मान लो 5 का गैप लेके आपने 2 डेटा पॉइंट ले लिया. सौरभ, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. आपका हेड मसाज हम लोगों को मैम नहीं. ही इज राहुल मंडल, नॉट मी। ओके ओके. आ हाँ, मान लो 5 का गैप है, 5 डेटा पॉइंट्स का गैप है, एंड दो फिर 2 बार ग्राफ आपको मिल जाएगा, राइट? तो सॉरी, 2 बार्स आपको मिलेगा हिस्टोग्राम में, तो मुझे 5 ग्राफ्स क्रिएट करना है, तो इसलिए आई हैव टेकन 2 गैप ऑफ 2. तो वो आप अपने खुद के हिसाब से, स्केल के हिसाब से कर सकते हो. अभी ये 19 टू 21 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसीज है? एक है 19, 1, 2, 2 है, 2, 3 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 3. तो ये 21 टू 23, 1, अरे यहाँ पे 4 होगा, 1, हम मतलब 4 हो हाँ 4 लिख दिया मैंने. इसमें देखो कितना है, 22, 23, 2 ही है. गए। 23 to 25, 25 to 27, 27 to 0.5 को छोड़ दिए तो कुछ दिक्कत नहीं होगा बार में? रुक जाओ इसमें, 27 to 21. हाँ बोलो अभी, तो हमने छोड़ बोलो. 26.5 को छोड़ दिया, मतलब 0.5 छोड़ दिया उसका फ्रीक्वेंसी जमाने के लिए उसकी। कहाँ तो पे छोड़ बार में दिया? दिक्कत नहीं ले करेगा ये? लिया, बार में, बार का जो साइज है उसमें? ये तो ले लिया मैंने यहाँ पे 26, हाँ, 25 to 27 के अंदर, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया. अच्छा ठीक है। हाँ ये लिया मैंने, छोड़ा नहीं. अभी ये हमें प्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में, अभी इसका कुछ काम नहीं है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिए. अभी ये हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट होगा? क्या है गैप? 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27.
अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 1 to 4 है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे फिर 19 to 20 4 है, 19 to 21 यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट 21 to 23 2 है, फिर 2 3 1 ज्वाइन करो। मैम दिस इज बार ग्राफ राइट? दिस इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। बार ग्राफ तो ऊपर वाला था ना। यस यस द फर्स्ट वन। हाँ ठीक है, so this is the basic difference between bar graph. So what type of data we are showing, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर if the question is the difference between bar graph and histogram, then you need to explain this. ओके So मैम। scatter plot, and these are the different types of scatter plot. एक है तुम्हारा strong positive जो हमें मिला था, इसमें moderate और negative, like नेगेटिव है थोड़ा बहुत, बट उतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जैसे एकदम क्लियर है पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये थोड़ा ऐसा है, बट दैट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। एक टाइम तक पॉजिटिव हो रहा था, फिर नेगेटिव हो गया एक टाइम के बाद। स्ट्रॉन्ग नॉन लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो विल कंटिन्यू फ्रॉम योर फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसीज टुमारो। ओके, तो गाइज मुझे एक बार याद दिला देना नेक्स्ट वीक लास्ट सेशन से पहले। हिस्टोग्राम का रिलेशनशिप एक्सप्लेनेशन कर दो ना एक बार, हम्म। जो बार बना है अपने हिस्टोग्राम का। इसमें कुछ रिलेशन क्या ही होगा, ये तो कितने सारे इस एज के अंदर कितने लोग हैं, इसमें कुछ रिलेशनशिप वैसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप हम स्कैटर प्लॉट से एक्सप्लेन करते हैं, बार अच्छा ग्राफ या हिस्टोग्राम से नहीं। हिस्टोग्राम जस्ट टू विजुअलाइज। ये बार देख के तुम्हें, ये हिस्टोग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो डेटा मेरे पास है उसमें 19 to 21 एज के अंदर सबसे ज्यादा लोग हैं, एंड उसके बाद पीपल आर बिटवीन 25 to 27। सबसे कम लोग हैं 27 to 29 एज रेंज के अंदर। इसमें कुछ रिलेशनशिप का कुछ नहीं समझना है। रिलेशनशिप वी एक्सप्लेन विद स्कैटर प्लॉट। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, एंड विल शेयर यू द पीपीटी टुमारो। गौरी कल शेयर कर दूं या आज ही चाहिए? आज ही कर दो मैम, आज ही कर ताकि दूंगी। कल के लिए हम लोग प्रिपेयर होके आए। हम्म। जो ये रेस्पॉन्ड
मैम लेफ्ट होगा शायद। मैम का पीसी हैंग हो गया था, हो रहा नहीं था उधर से। वो अभी हेलो भेजेंगे पीपीटी। मैम ज्वाइन चलेगी होना क्या? चाहिए। अभी ज्वाइन कैसे करेंगे? उनका टाइमिंग रहता है ना ज्वाइन मीटिंग का। कल भेजेंगे गौरव पीपीटी। हाँ कल ही बोल। होगा। गौरव हाँ भाई मेरे को लेक्चर का मेल ही नहीं आता यार, क्या पता क्यों। क्या नहीं आता है? लेक्चर का लिंक नहीं आया है मेल पे। भाई तू क्यों नहीं आ रहा है? तेरे को मुझे क्या पता, पूछना, वो है ना अपना लाइन पे कोई राठौड़ करके। कोई नहीं, कहाँ है कोई? अरे है बाबा, एक जन है। मैम उनको मेल यूट्यूब कर का है देता एक जन। बाकी। मेरे फोरम पे डाल दो। अरे एसक्यूएल का क्या करना है भाई? एसक्यूएल का रिपीट नहीं करने बोलो एसक्यूएल ना का उनको, आज कुछ नहीं तो बोल रहे समझा। थे। अरे कल तो वो देखो कल लेक्चर है ना, हाँ कल एसक्यूएल आएंगे ना मैम, तो एसक्यूएल कल में क्या अभी है? अरे आज तो बोले सबको नहीं क्या एसक्यूएल उनको, में आज बोले नहीं क्या पूरा मैडम को? बैच साथ में रहना चाहिए ना, स्प्लिट हो जाएंगे तो क्या मतलब फिर? अरे अभी तो बात की थी ना अपन ने, तो बोलने वाले थे ना, लेकिन किसी ने अरे बोला ही लेकिन वो क्या करेंगे, एक एक जन का करेंगे, तो ये पूरा अपना जो बैच है वो सबका कर देगा तो अच्छा रहेगा ना। ये अच्छा 30 लोग मिलके बोले तो अपने अच्छा। ग्रुप में सब लोग है ना, जो भी इधर है? कौन सा? हाँ नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ मैं ग्रुप में नहीं यार। हूँ, सिर्फ हाँ तो मेरे